Good morning and welcome to your own channel EduBharat. In continuation of the Informatics practical exam series, now we are in the question of the MySQL series. That will be the third question. The first question we have done the data frame of the series. Second question you have to make the chart that is based on the data visualization, and the third question that is of 7 marks, that is MySQL. MySQL you have to create a table. This is again what you have done in the whole year, and mainly function you have to do, that is either scalar function or aggregate function. So based on the function, question can be asked to you in the practical exam. So first we just know how to create a table. The table is given here, that is TR number, account number, amount and the type. So the first question you can say what is the degree of this table, that is how many columns, that is total number of column is become degree of that table. So the degree of table here is 4, and the cardinality of this table, that is total number of row, is 5. So cardinality of the table is 5. So we start the question, create about table. So first you should just take which one is the primary key, then the account number, that is in integer form, amount is in integer, but we should take always amount in the decimal. So we can take the 1 2 3 4 value, maximum value is the 1 2 3 4. We can take the 6, that is 4 comma 2, we can take it here. And the type withdraw, this can be take the character, that is varchar form. So this is the data structure of the table. So now we have to create table in MySQL. So MySQL, how can we create it? I have written here this one. So before creating any table, first we have to create the database. So here we have to take the new database. So this is database already we have taken. We can just check SCLECT, select DATABASE, select database, this one. So let me check. So database is test 12. Okay, the same database we can use, that means database already selected here. So now we can directly create it or we can use it. So already use it because this is selected. So we can write the command. So directly we just type it, paste. So this is create table transaction, TR number integer, and here taken float 6 comma 2, that is 8 it is taken, and type varchar, that is 10 number. Okay, so now after that we can write here the command describe, DESC. This is just I am showing to you what will transaction count, TRANSACTION, this is the name of the this. So we can check the detail has come here, integer, and the float 6 comma 2 and the varchar 10. Now we just insert the data. So how can we insert the data here? So this is the data here. I just insert it. So now this is inserted. Okay, now we have to give the command SCLECT, select star from TRANSACTION transaction. So we can see what is the problem. TR, the command is mistake here, TRANSACTION. So this is the data which we have inserted, that will be display here 1 2 3 4, because 6 is the total and this is the 2 decimal, so 1 2 3 4 5 6. Okay, this is. So next the command we should know what will ask. So the question, we just do the question. Question is what? Detail of transaction. This one is display average amount. This question is wrong. Detail of transaction in descending order of type हो सकता है आपके, ठीक है. Transaction detail है. This is not the teacher. Detail of transaction we can write here, TRANSACTION, another table. So that will become copied the data. So detail of transaction, select star from transaction
order by what? Type. Order by type and descending order, so we should write the DESC. The next question, display average amount of transaction. Average amount need to display to select AVG amount from transaction. Display lowest amount, that is select lowest means minimum amount from transaction. डिस्प्ले नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ ईच टाइप. यहाँ पे डिस्प्ले नंबर, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट मीन सेलेक्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब आपकी ट्रांजेक्शन कितने बार हो रही है ऑफ ईच टाइप, विथड्रॉ, डिपॉजिट एंड दिस. सो वी कैन जस्ट राइट TR नंबर. ओके, देन आफ्टर दैट group by type. So we just write here the command. I just show you. This is the first command. Select start from transaction, order by type, descending. We just write it here. Okay, the first question. No need to type it. Control C. You can see here type and count star as number of transaction. This directly we can write, or what will happen if I write the number. So here we give the command Control V. Here we cannot write. We have to save it here, paste and just semicolon. You just see the command. What will happen? Type in descending, so WWDDD, this will come. Okay, so this is the first command. What the next command? This is the first. Second question is, we can check it here. Select average amount. I told you have to find the average amount, so we write the command select average. We can write here select average amount as AVG amount from transaction. So in here we can write average amount in double quotes because this is a string. This one is a string. Okay, and we just enter it. So see the answer. This. Suppose I write this next command. I will just use it. Without this it will work or not. Because few will work, otherwise not. Next, select minimum amount from transaction. As I told you, this one is important. Select type star. This one we will check. Control C. What will happen if the count star or count another? That is count column name if I write. So we have to copy it. Select type count star as this by type. See the command. Error. Why I told you? What will happen? You have an error in SQL statement. Check the manual. That is the group by type in line 1 syntax to near the num. Okay. So we just copied it and we can write here select type we have taken. Here we will write count what? So here we will write count. Here in place of count we can write the TR number. TR underscore number. This number I have written. Star हटा देंगे. As number of transaction from transaction group by type. ठीक है, select type लिया, count this number. count हमें number को count करने हैं, कितने number आ रहे हैं आपके as number of transaction. Okay, from this we will see what will happen. Again this is error. Why? Because right syntax में there is some error. Let me check is what is an error. Select आपने type लिया, type दे रखा है. count हमने क्या दिया है? number. as को हम अभी हटा देते हैं. We will just check it. यहाँ पे as we will remove it. अदरवाइज as से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है. तो select type count from transaction group by type. हैविंग हम क्यों देंगे? अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया हैविंग भी अगर हम लगाते हैं तो दे सी द रिजल्ट. ठीक है, यहाँ पे हम वो नहीं लगा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि काउंट स्टार में आपका काउंट कर रहा है, वो काउंट स्टार में काउंट स्टार तो ले लिया,
काउंट हम ट्रांजेक्शन भी ले सकते हैं, वो भी दिखा देते हैं। अब यहाँ पे हमने ली कमांड काउंट आईडी, व्हाट विल हैपन। नहीं, ट्रांजेक्शन आईडी नहीं, यहाँ पे क्या है, टीआर नंबर है, टीआर नंबर। ठीक है, अब हम इसको देख लें क्या आता है, तब भी आ गया आपका। ठीक है, 3 और 2। अब मैंने इसी में यूज करा है यहाँ पे एज। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लेती हूँ एज, और यहाँ पे मैंने लिया आई कैन राइट THY, कुछ भी मैंने दिया है यहाँ पे, सपोज एनी हेडिंग आई जस्ट वांट, देन एंटर, देन इट विल ओके। So there was some error. We have written the select type constar as from transaction group by type, कहीं वर्ड हो रहा होगा, अदरवाइज तो कमांड टाइप की स्पेलिंग में भी ठीक था। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो वी कैन राइट द कमांड, आफ्टर दैट द कमांड इज select TR number left, ठीक है, एज फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। सो नेक्स्ट में लेफ्ट आपको लेना है कमांड, तो वी कैन डायरेक्टली राइट हियर, कर देते हैं, व्हाट विल द कमांड, SELECT, सेलेक्ट व्हाट, लेफ्ट। किसका लेफ्ट लेना है हमें, लेफ्ट किसका लेना है, लेफ्ट इज व्हाट, लेफ्ट आपका हो सकता है अकाउंट नंबर, लेफ्ट आपका हो सकता है ट्रांजेक्शन नंबर, है क्या, चेक कर लेते हैं। लेफ्ट में आपका क्या लिया, टाइप, तो लेफ्ट मैंने आपको लिया सपोज TYP, दिस इज द नेम, कॉमा मुझे सपोज 3 लेना है, फ्रॉम ट्रांजेक्शन TRANSACTION सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं सब फर्स्ट 3 लेटर आ गए। सो दिस वाज द क्वेश्चन वी हैव डन। Okay, the next question is, this is the based on this, the next question I will just tell you the question. Second question, observe the following, that is the train question. 1 2 3 4 5, degree of the table is 5 and the cardinality of the degree is also 5. Create above table, insert all the record, display detail of employees in ascending order of name, display sum of payment of all trains, display lowest payment, display number of train of each start, display last 3 character of each start of all train, last 3 character of each start। ठीक है, तो इंसर्ट आपको टेबल क्रिएट हो गई, उसका हमें करना है डिस्प्ले डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय, क्या बोला उन्होंने इनको, डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज कहाँ से आ गया, राइट एसक्यूएल कमांड। ओके, कमांड हमारी गलत हो रही है इसमें, तो ये यहीं तक आपका आएगा। ठीक है, सो आई होप यू ऑल गेट द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका आएगा डिस्प्ले डिटेल ऑफ, आपका यहाँ पे आएगा ट्रेन, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है हमारा, TRAIN। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले पेमेंट्स ऑफ ऑल ट्रेन, इंसर्ट ऑल द रिकॉर्ड एंड लोएस्ट पेमेंट, ये पेमेंट आ गई आपकी, नंबर ऑफ ट्रेन एंड लास्ट 3 कैरेक्टर। क्लियर है कमांड। सो अब हम आते हैं इनके क्वेश्चंस में, हमारा क्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये टी नेम वर्क है 30 से, और टी नंबर हमें लेना पड़ेगा क्रिएट टेबल, तो सेम कमांड है, यहाँ क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्टली। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ट्रेन ऑर्डर बाय, टी नेम असेंडिंग, ESC नहीं डालेंगे तब भी आपका असेंडिंग लेता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग। सेलेक्ट सम पेमेंट हमने करना है, सेलेक्ट मिनिमम पेमेंट आएगी, सेलेक्ट स्टार्ट काउंट स्टार फ्रॉम द ग्रुप बाय स्टार्ट, एंड सेलेक्ट टी नेम, राइट फंक्शन यहाँ पे यूज है फ्रॉम द ट्रेन। सो दिस वाज द जस्ट आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चन फंक्शन। आपके इसमें ग्रुप बाय के साथ हैविंग भी आ सकता है, जैसे आपने फंक्शन लगाया है कि ग्रुप बाय स्टार्ट, तो ग्रुप बाय स्टार्ट में आप दे सकते हो, so group by start having पेमेंट ग्रेटर देन आपका दे सकते हो 80,000 या कुछ इस तरह से भी आप कमांड दे सकते हैं। सो दिस इज जस्ट आई हैव गिवन द एग्जांपल व्हाट यू हैव डन इन द होल ईयर, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम, डोंट वरी एंड डू कामली योर एग्जाम एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पेशेंटली and all the best for your theory exam also. So we will meet again for the theory exam. So thank you very much again.
God bless you. All the best.